Hello students, as we all know, we have already discussed in previous session how we can create game objects for the competition, like how we can make ship hatch, how we can create coral reef, how we can create waste objects. We have already prepared 6 waste objects, right? How we can create a whale game object, correct? But in today's session, we are going to discuss exactly about the missions. That means the task of robot, which robot will perform during the competition on the mat. So today we are going to discuss all the things in this class. Okay. And then we are Okay, ma'am. moving on the robot designing. That means how we can create robotic structure for fulfill the all missions to accomplish that task which we are going to discuss today. Okay. So firstly, I'm going to tell you about manage ship waste. This is our first mission, manage ship waste. The robot should bring the waste from the ships to the recycling area on the game field, and robot need to collect the waste from the ship. Collecting the waste from the yellow and green ship is a bit more difficult, and team will get more points for that. That means simply robot will come from the launching area and bring the waste to the recycling area. This is the main mission. Full points are awarded if the waste in the corresponding colored recycling area. Otherwise, no points will be awarded, right? Like you can see the projection of the mission of ship waste. I'm going to show you. Yes, this is the projection of waste object mission. Like for example, this is a red waste object. If it is completely inside the recycling area, then you will get 10 complete points, right? If your robot will drop the waste object just like this in the recycling area, then it is perfectly fine. But the waste object in what condition right now? Lying condition. That is also fine. You will get the complete 10 points for that. But if your waste object is partially inside means half in, half out. आधा अंदर आधा बाहर अगर आप वेस्ट ऑब्जेक्ट ड्रॉप कराते हैं रोबोट से, then you will get only and only 5 points for touching the correct color. Okay. क्यों मिल रहे हैं वो 5 points? Because your waste object is touching the exact same color. But in case your robot will drop the wrong waste object in the red color, like black in red recycling area, then no points will be awarded. आपको कोई point नहीं मिलेगा. यहाँ 5 points किस चीज के मिल रहे हैं? Because आपका जो red object है वो partially in है, red color correct color को touch कर रहा है. For example, this is the criteria your robot will create. For example, so in case you can see the black object is partially in the black recycling area, that's why we can take 5 points for that mission. In short, we can say अगर robot waste object को correct color में drop करता है, then you will get complete 10 points.
partially correct color को drop करता है, then you will get only and only 5 points. That means partial points. But if in case your robot will drop the wrong color in the recycling area, then you cannot receive the points, even single 1 point. Okay, so this is the first mission. Is it clear to all of you? I'll show you. This is your mat. This is the area where we can launch the robot, जहां से हम अपने रोबोट को लॉन्च करेंगे. अब यहाँ पर पर्टिकुलर प्लेसेस पर आपके वेस्ट ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड होंगे. यू विल पिक इट एंड देन यू विल ड्रॉप इन द रिसाइकलिंग एरिया. दिस इज द टास्क. अगर रेड से पिक करते हो और रेड में ड्रॉप करते हो, देन यू विल गेट कंप्लीट पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स. और अगर यहां से पिक करके आप इसको पार्शली ड्रॉप कर पाता है रोबोट, देन यू विल गेट हाफ पॉइंट्स. और अगर यहीं से पिक करके वो किसी ब्लैक में, ग्रीन में, येलो में, व्हाइट में, कहीं अदर कलर्स में ड्रॉप करता है, देन यू विल गेट नॉट एनी सिंगल पॉइंट. इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay, so we are going to move in the next criteria, and that is rescue the whale. Our second mission is rescue the whale. Whale has been spotted in one of the coral reef. We have already discussed in previous class. That means whale position is not fixed. We will put whale by the help of randomization. That means out of 4 places, whale will be on any one place in single round. 4 places में वो किसी भी single round में किसी एक place पर place की जाएगी by the help of randomization. कहीं भी हो सकती है. So the sea is shallow there and it is not the best place for the big animal. It might be lost. There is a whale watching area in the open ocean. इसको कनेक्ट किया गया है आपके रियल एग्जाम्पल से कि उसको बड़े प्लेस पर प्लेस किया जाता है बिग एनिमल को, तो इसीलिए उसको एक वेल वॉचिंग एरिया दिया गया है जहां आपको उसको प्रोटेक्ट फुली वहां पर प्लेस करना है. रोबोट शुड ब्रिंग द वेल फ्रॉम द कोरल रीफ टू द वेल वॉचिंग एरिया. सो मेन टास्क इज व्हाट? दैट इज वेरी सिंपल. Robot will bring the whale from the coral reefs and put to the watching area. And where is the watching area? Where is the whale watching area? Sorry, this is the whale watching area, right? This one is whale watching area, and maybe whale should be here or should be here or maybe here or maybe here, right? यहाँ भी होना चाहिए उसको, मे बी यहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, राइट? सो यू कैन पिक इट फ्रॉम द coral reefs and you have to put, or we can say that drop into the whale watching area. So this is a mission. But how it is possible? हम कैसे इसको फीड कर सकते हैं कि वो यहाँ होगी या यहाँ होगी? So we will do one thing. We will take a ultrasonic sensor to detect the whale object, right? अगर वो यहाँ डिटेक्ट करता है, then you will pick it and drop here. Okay. Now next condition, I'm going to show you the projection and how much point for the mission of whale. Yes, so this is a projection. If your whale is partially inside in the whale projection area, so you will get 8 point only. अगर बाउंड्री लाइन को टच करता है और इसको इनसाइड हल्का सा टच कर रहा है, then you will get 8 points. And if your whale is completely inside the whale watching area, then you will receive complete 19 points. But in case your whale is damaged, then you will get 0 point.
Okay, why we are getting 0 point? Because we'll get damaged. Is it clear to everyone? ओके मैम, यस मैम। ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर आपका पार्शियली टच करता है देन यू विल गेट 8 पॉइंट, कंप्लीटली इनसाइड कंप्लीट पॉइंट 19 पॉइंट, और अगर वेल को किसी भी तरीके से डैमेज करते हैं या रोबोट किसी भी तरीके से उसको डैमेज करता है देन यू विल गेट 0 पॉइंट ओनली। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट मिशन इज restore the coral reef. Life underwater is important for our overall ecosystem. We know, right? That is why we want to restore the coral reefs. इसी रीजन से हम क्या कर रहे हैं, उनको रिस्टोर कर रहे हैं। In these areas the corals and other marine life are all part of an ecosystem. They depends on each other for foods and shelter. So the robot should bring the new corals to the coral reef. क्या करेगा रोबोट का टास्क, क्या होगा कि जो भी कोरल्स हैं उनको कोरल रीफ में फॉरवर्ड करने का काम करेगा। फुल पॉइंट्स आर अवॉर्डेड इफ द कोरल इज कंप्लीटली इनसाइड द कोरल रीफ। अगर कोरल रीफ के इनसाइड प्रॉपरली चले जाते हैं, एंड वी नो वेरी वेल द रेक्टेंगल स्क्वायर नियर द कोरल स्टार्ट पोजीशन। ओके, मैक्सिमम 1 कोरल पर कोरल रीफ काउंट। एक कोरल रीफ पर एक ही होना चाहिए कोरल, उसी को काउंट किया जाएगा। एक पर आप 2 ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द प्रोजेक्शन फॉर दिस मिशन? This is very simple mission actually, because coral positions are fixed. There is no randomization. कोई randomization नहीं है. We know very well in early stage, uh, this is a rectangle, this is a yellow color rectangle where our coral reef is placed in each round, and we have to put the coral reef into the big square boxes, right? हमें क्या करना है, यहाँ रेक्टेंगल से उसको किस में डालना है, स्क्वायर में। तो हम सिर्फ नॉर्मली पुश करके भी इसको अंदर कर सकते हैं। एंड इवन हाफ पार्शियल पुश वी गेट 3 पॉइंट्स, completely inside but not completely in, half part is outside the square, then you will get also 3 points. And completely, if one coral reef is completely in, then you will receive 6 points. Or in case your all 4 coral reefs are completely inside in each square, then you will get 36 points, because 6 each, right? Similarly, अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में आप उसको इनसाइड करते हो देन यू विल गेट 6 पॉइंट। बट इन केस आपने एक ही स्क्वायर में दोनों कोरल रीफ को पुट कर दिया देन यू विल गेट ओनली 1 coral reef marks. That means 6 point, because we need to be careful about the count, right? That means we have to keep one thing in our mind. We have to put only one and only one coral reef inside the square box. Okay, all clear? यस मैम। This is very simple mission. Normally you have to just push the coral reef from the yellow color to the square box, and you will get 6 point for that, right? Okay, now we are going to move forward. Now next is get bonus point. Bonus point will be awarded for not moving or damaging the fence. दो फेंसिंग लगी हुई हैं हमारे रिसाइकलिंग एरिया में. इफ वी आर नॉट मूविंग दीज फेंसिंग और नॉट डैमेजिंग एनी फेंस, then you will get reward points, or we can say that awarded points. ठीक है, a fence is moved if it at least one pillar of the fence is no longer touching the gray circle when it placed at the beginning.
Okay, so what are the points for bonus marks, or we can say what are the bonus points? So 3. Fence pillars are not touching the gray circle and fence is not damaged, so you will get 3 points. अगर वो किसी भी ग्रे सर्कल को टच नहीं करेंगे या फिर उसको डैमेज नहीं करेंगे तो आपको 3 पॉइंट्स उसके मिल जाएंगे. 3 3 दैट मीन 6 मार्क्स आपको नॉट डैमेजिंग के मिलेंगे. सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है इस मिशन में. अगर आप उनको टच नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, कौन से, जो यहाँ पर ये हम प्लेस कर रहे हैं फेंसिंग ग्रीन में और येलो में रिसाइकलिंग एरिया के अंदर 2 डॉट्स बने हुए, अगर वो हिलते नहीं है या टूटते नहीं है देन यू विल गेट फ्री 6 मार्क्स. ओके, तो इस मिशन में तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ केयरफुल रहना है. एंड द लास्ट मिशन इज पार्किंग द रोबोट. That means after finishing all the missions, your robot should be completely inside the start and finish area. The projection of robot is partially in, so you will get the complete marks. अगर partially in भी कर पाते हैं तो अभी आपको full marks मिलेंगे. I will show you the projection. This is the and 16 points for this is a zip edge waste object. Yes, this one. You can see this is your start and finish area. If your robot is outside the start and finish area after completing all the missions, then you will get only 0 points. If your robot is partially in after completing all the missions, then you will get 15 points. And if your robot is completely inside the start and finish area, then you will also get only and only 15 points. Then that means in both cases you will receive 15 points, either your robot in that condition or this condition, right? चाहे आप यहाँ इसको छोड़ दें, चाहे कंप्लीटली अंदर चला जाए, दोनों केसेस में 15 ही पॉइंट मिलने हैं, पर बाहर नहीं रहना चाहिए. बाहर रहने पर आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा. इज इट क्लियर? यस मैम. ओके, वेस्ट ऑब्जेक्ट्स में बस आपका येलो और ग्रीन का मार्क्स ज्यादा है बिकॉज यू नो वहां पर फेंसिंग है. अगर उसको आप प्रॉपरली पुट कर देते हैं देन यू विल गेट पॉइंट्स. ओके, 16 पॉइंट्स completely inside. So these are the missions which your robot will perform during the competition, and it is totally depends upon you which kind of strategy you will make to fulfill all the missions in a very short time or under limit, right, without any damage. I hope all things are clear to you. Yes or no? If it is clear, then we will start make strategy or make robotic structure. यस मैम. Okay.